Hello everyone, I hope you all are good. So today we are going to start the topic electric field. But before starting this topic, the definition, the basic derivation that electric field due to point charge or due to group of point charge we have done earlier, right? So I will start this video lecture from electric dipole topic onwards, right? So it's the first part of this chapter, that is electric field. Okay, let's start. Yes, the first topic is electric dipole, right? So direction of electric dipole is always from minus q to plus q, right? So please remember it is a minus q charge and here it's a positive charge. So distance between these two charges is 2a, right? So when a system of two equal and opposite charges separated by a distance, that is some finite distance, here that distance is 2a, so that system is known as the electric dipole, right? So how we will notate the electric dipole? The symbol is p, right? So we will denote the p vector. P vector is equal to charge, that means magnitude of either charge, because they are of same charge, q, only the sign is different, right? Here minus and here plus, magnitude is same. So you will take here q into the separation between two charges, that is 2a. So what we conclude, that what is electric dipole? Equal and opposite charges separated by a distance of 2a or some finite distance, that is electric dipole. And here minus q and plus q, these are charges. So p vector is a symbol of electric dipole, that is equal to q into 2a vector. And one more thing, the direction of electric dipole is from minus q to plus q, remember it, right? Now we will see example of electric dipole. Here that is a axial. The H in axial, you can say positive, there is a one positive charge, and here chlorine has minus one negative charge. So one positive, one negative, that means one is a magnitude that is same but charges are different. So we will consider this molecule, hydrochloric acid molecule, then we consider it as a electric dipole, right? So for example, here it's plus e charge and here minus e, that charges are separated by distance, that is known as the electric dipole, right? Now we have to find, this is a figure light, right? So this is a dipole, minus q and plus q separated by a distance of 2a. You have to find the electric field at point P due to this dipole. That means how you will find? The first, you will find the electric dipole due to this plus q charge, right? And then you will find the electric field due to this minus q charge. When you will find the electric field due to both these charges and then you will add up, you will get the electric field, resultant electric field at point P. Now you will see the positive, when there is a positive charge, electric field lines move outward from positive charge, and when there is a negative charge, electric field lines move towards this charge, right? So this is a positive charge, electric field line move outward, so direction is like outward at point P, moving outward like this, right? Now this is a negative charge, so electric field direction is like this, towards the charge, right? So resultant of these two electric field is like this, in between these two electric field vectors, right? So this angle will depend on how you orient the electric dipole, right? For a time being, you will just understand the concept that how to find the resultant due to an electric dipole at a point P, at any point you will say, right? Okay, next is the derivation, that how to find the electric field intensity at an axial point due to an electric dipole. What do you mean by first axial point? See, axial point means along the axis of dipole, right? For example, I will take this dipole. You have to find at axial point, that means if I extend this dipole like this, you have to find at this point, right? Along the axis you have to find the electric field at this point P. So when we will take the point along the dipole, then you will say that is the axial point, right? So due to this dipole, you have to find the electric field intensity at this point. So basic concept is what? You have to first find the electric field intensity due to plus q charge at this point, then minus q, then you will write
summation up. So now we will see how to derive it, right? Okay, let's just see. This is a dipole, this is minus q charge. So you have to find the electric field intensity at point P due to charge A and due to charge B, right? So what is the net resultant electric field at point P due to these charges, that means due to this dipole? First of all, you have to find the electric field intensity at point P due to charge A, right? That means charge at point A, right? Now before deriving the expression, first we will see that what is the arrows, this what will we say, right? Now you will see this is a negative charge, so and we place a unit positive test charge because we have to find the electric field intensity at point P, right? So there is unit positive test charge at point P. Now this is positive charge and this is negative charge. So this negative charge, this unit positive test charge is very small in magnitude, so this charge will attract this towards the itself. That means sign is like this, EA, towards the charge, negative, right? Now due to this positive charge, this is higher in magnitude, so this positive and this will also positive, so repel each other, so sign arrow is like this, right? Now the electric field intensity at point P due to A is what? KQ by R square होता है. What is R? The distance between this point and this point, right? Now how we distribute this? This total distance is 2A, so at midpoint O this one is A and this one is also A. Now from point O at point P the distance is R, right? From O to P the distance is R. Now KQ by R square, so distance we will take between this A and this P charge is A, this one is A plus R, that means A plus R का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? क्योंकि यहाँ तक तो A है बट हमें P तक जाना है A से लेके, राइट? A से O तक A and O से P तक R, that means R plus A का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट? Now the distance for B charge is BP, that means we will take this distance. Now total distance from O to P is R now, and this OP is A, so we have to find only BP. So what we will do, R minus A, then you will get BP na. So R minus A when you will put, then you will get BP, because पहले हमें AP फाइंड करना था तो वो क्या था A plus R. Now हमें BP फाइंड करें तो हमें माइनस करना पड़ेगा R में से this distance A, then you will get this BP distance, right? So R minus A का whole square. Now what you will see in magnitude which one is greater? यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कम, राइट? सो R प्लस ए ज्यादा होगा या R माइनस ए? तो R प्लस ए ज्यादा है, इसीलिए अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी कम होगी, राइट? सो ई ए का मैग्नीट्यूड ऑल ओवर देखें तो ई बी से कम होगा, राइट? सो ई ए इज लेस देन ई बी, राइट? नाउ वी हैव टू टेक अ रिजल्टेंट. सो व्हाट यू विल डू, टोटल मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ई बी माइनस ई ए, क्योंकि ई बी बड़ा है ई ए से, राइट? और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए बीच में हम नेगेटिव लगाया, राइट? नाउ पुट जस्ट वैल्यू ऑफ ई बी एंड ई ए व्हेन यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज कॉमन फ्रॉम बोथ, 1/4 एप्सिलॉन हियर, राइट? सो क्यू डिवाइड बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस क्यू डिवाइड बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर, क्यू बी कॉमन. नाउ टेक द एलसीएम, a is a minus b, a plus b. So just apply the formula of a square minus b square in the denominator. A square minus b का whole square हो जाएगा, right? When you will take LCM, you will see these two quantities cancel with each other, right? So you will left with 4RA, 2RA plus 2RA, that is 4RA, right? Now you will know, अगर मैं स्प्लिट कर दूं 4R को 2A into 2 लिखना चाहूँ, राइट? सो व्हाट इट विल बिकम, दैट इज बिकम अ डाइपोल मूवमेंट, बिकॉज डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q into 2A चार्ज into डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस. सो Q into 2Q into A को क्या लिख सकती हूँ मैं? P. सो मैंने P पुट किया और जो बचा उसको 2R एज इट इज, राइट? Now the expression will become 2RP divided by 4 pi epsilon naught R square minus A square whole square. So here you will see the comparison between R and A. Which one is larger? R is much larger than A. So you will
इग्नोर फॉर अ शॉर्ट डाइपोल केस, अगर आपसे पूछ लिया कि शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या होगा, दैट मीन्स ए बहुत कम होगा, तो उस केस में आप ए को इग्नोर कर सकते हैं इफ द केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल इज कम, राइट। सो नाउ यू विल सी व्हेन डाइपोल इज वेरी स्मॉल लेंथ या शॉर्ट डाइपोल आ जाए, दैट मीन्स ए लेस देन आर, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दैट मीन्स वी विल इग्नोर दिस टर्म। सो 2 into 2 4 हो जाएगा और a तो हम इग्नोर करना है, सो r4 और r एक ऊपर पहले था, सो r cancel this power, you will left with 4 by epsilon naught 2p divide by r cube, right? Now you will see what is the resultant direction of electric field, which one is greater? Obviously मैंने आपको बताया था डायरेक्शन किसकी ज्यादा होगी, which one is, yes, here EB is of larger magnitude than EA, right? So direction भी हम उसी की concept में मानेंगे, so the direction is toward the net is P along, that means PN की तरफ, जहाँ जिस तरफ EB की direction थी उसी तरफ net resultant electric field की direction होगी, that is PN, right? Okay, now this is the derivation of axial point. Now we will see that if electric field dipole हमें equatorial line पे निकालनी है, see what is the meaning of equatorial and what is the meaning of axial. First you will see दिस इज डाइपोल, हम पहले हमने क्या लिया, एक्सियल पॉइंट, अलोंग द डाइपोल पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, अब हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालनी है। इक्वेटोरियल का मीन्स या ट्रांसवर्स लिखा जाए तो सेम थिंग है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। सो इक्वेटोरियल मीन्स एट 90 डिग्री एक्जैक्टली नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मैं इस डाइपोल का नॉर्मल 90 डिग्री पे ड्रॉ करना चाहूँ तो ये पॉइंट होगा। सो एट पॉइंट एन यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस डाइपोल। सेम कंसेप्ट, यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू ड्यू टू प्लस क्यू, देन this is a resultant. Now but there is some problem here, there is a resultant electric field but along the component form, right? Now you will see this is minus q, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस किया तो अट्रैक्ट, दैट मीन्स डायरेक्शन ये हुई, ये पॉजिटिव है रिपेल, दैट मीन्स डायरेक्शन ये, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इन बिटवीन दिस टू, सो दिस इज द रिजल्टेंट। नाउ वी विल सी विच कंपोनेंट कम along the direction of this line and which one go perpendicular, but our concept, our understanding is from the this part, right? Because our resultant is along this component, so we will take only that component that will along the resultant, not perpendicular, right? Okay, now we will see how this component come here. If I place this dipole at an angle theta and here also angle is theta, I will mark here, this angle is also theta, right? So now you will see this one is theta and this one is also theta. If this is theta, this is also theta. Why? Because the alternate angle z बन रहा है ना यहाँ पे, सी दिस इज अ जेड लाइक, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, अगर ये ई ए है तो जिसके साथ थीटा एंगल बनता है वो कौन सा कॉम्पोनेंट है, कोस का, राइट? सो दिस विल बिकम ई ए कोस थीटा एंड परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट विल बिकम ई ए साइन थीटा। बट मैंने बताया आपका इंटरेस्ट का ये साइन थीटा नहीं रहेगा, वाई आई विल टेल यू लेटर। फर्स्ट वी विल सी कि अब ई बी के कॉम्पोनेंट्स कैसे फाइंड आउट करें हम, राइट? सो नाउ यू विल सी दिस एंगल इज थीटा, मैंने यहाँ पे बना रखा है, अगर ये मैं बनाऊँ, अगर ये मेरी ई बी है, राइट? तो अगर ये थीटा है तो अगर इस एन प्राइम को मैं इसके पैरेलल, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? सो अगर यहाँ पे थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, राइट? सो ऑल्सो इफ दिस इज थीटा तो थीटा एंगल के साथ ये भी कोस थीटा कॉम्पोनेंट बन जाएगा और ये साइन थीटा। नाउ यू विल सी कि हम ये कॉम्पोनेंट क्यों कंसीडर नहीं करते, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड और इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इन दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, राइट? सो दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा ही नहीं, राइट? ये वाला ई बी साइन थीटा वाला, right? So which one is left only? So the component left that will contribute is along the resultant, that is EB cos theta and EA cos theta. Just add these two quantities, EA cos theta plus EB cos theta. Now you have to find the magnitude of electric field intensity at due to a point at point n. KQ by r square, distance क्या लेंगे ये वाला, but how you will find this distance? क्योंकि this distance total 2a होता है, हाफ करूंगी तो that distance is a, और n से लेके o तक पॉइंट का डिस्टेंस है r. So by Pythagoras theorem you will find out the distance an and similarly nb, because these two sides are same, क्योंकि equilateral triangle बन रही है, right? So an square is equal to ao square plus no square. AO कितना है a स्क्वायर और ON परपेंडिकुलर कितना है r. सो
हमें फाइंड आउट करना है हाइपोटेन्यूज, राइट? सो दैट इज ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ एन ए स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बट नाउ यू विल सी कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालें. टेक दिस ट्रायंगल NAO. इन ट्रायंगल NAO दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल. कोस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस हमारा ए है, हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया. सो दिस हाइपोटेन्यूज क्या होगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तभी ये हाइपोटेन्यूज बनेगी, राइट? सो जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा एंड सोल्व दिस. टेक द कॉमन थिंग्स, KQ a कॉमन, दिस विल ऑल्सो कॉमन. सो यू विल लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. यहाँ पे NB स्क्वायर भी सेम. जस्ट सॉल्व दिस, you will get these quantities. Now as we done in above derivation, हमने P बनाने के लिए कंपोनेंट्स को क्लब कर दिया था, राइट? तो 2A इंटू 2 इंटू A इंटू Q P बन जाएगा. तो KP डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2 हो गया, राइट? पहले केस में हमारे पास क्या था? P डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर था. हमने P ही बनाया था डाइपोल, वहां पे 2 लग गया था. यहाँ पे 2 कंपोनेंट नहीं आ गए, राइट? नाउ सिमिलरली हम केस करेंगे शॉर्ट डाइपोल के लिए, जैसे पहले किया. शॉर्ट डाइपोल के लिए ए स्क्वायर को इग्नोर करेंगे. सिमिलरली वी डू दैट. सो शॉर्ट डाइपोल के लिए हमने ये इग्नोर किया. सो लेफ्ट विद आर स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, यू विल लेफ्ट विद ओनली क्यूब हियर. सो ड्यू टू द डाइपोल, ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, दैट यू विल लेफ्ट विद एक्सप्रेशन KP डिवाइड बाय R क्यूब. दैट मीन्स along n prime there is a electric dipole moment direction, right? Along the resultant, right? Now we will do the numerical based on the electric dipole. So let's do the numerical based on these concepts. So calculate the electric field due to an electric dipole of length 10 centimeter and consisting of the charges of plus minus 100 microcoulomb at a point 20 centimeter from each charge. So what do you mean by it? The meaning is this is plus, this is minus Q. दोनों charges पे अगर dipole है तो same होगा, just sign difference here plus and here minus. Now you will have to find, उन्होंने क्या बोला है? 20 centimeter from each charge. उन्होंने बोला कि जो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है वो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस है. दैट मीन्स दैट डिस्टेंस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ चार्जेस. अगर आप एक्सियल पॉइंट लोगे, क्योंकि इस डेरिवेशन क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया गया कि आपको एक्सियल पॉइंट यूज करना है इक्वेटोरियल वाले डेरिवेशन का रिजल्ट यूज करना है. सो व्हाट यू विल सी हियर दैट here it's given a hint 20 centimeter from each charge. that means दोनों चार्जेस से इक्वल डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल ही होगा. अगर आप एक्सियल लोगे तो वो डिस्टेंस सेम तो नहीं होगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ, ये डिस्टेंस कुछ और होगा और वो डिस्टेंस कुछ और. सो दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ इक्वेटोरियल डाइपोल, राइट? सो this distance is 2A, you have to use only A, so that is 5 centimeter. Convert into SI units, centimeter to meter, right? Just apply the formula of equatorial point. What is that? KP divided by R square plus A square raised to power 3/2, right? So now you will see here this distance 9 into 10 is power 9. K की वैल्यू, P की वैल्यू 2A into Q पुट करोगे. A आपको पता है, Q आपको पता है. रेडियस इज 0.2 मीटर क्यूब. यहाँ पे मैंने फाइंड आउट कर रखे हैं, प्लीज सी हियर A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 की वैल्यू, क्योंकि A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेज टू पावर हाफ की वैल्यू हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता चलेगी, राइट? सो व्हाट इज, see this distance is A square plus R square ना. so this distance हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अभी इसमें तो कुछ फाइंड आउट करने की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच चार्ज. जस्ट डिकोड द सेंटीमीटर इनटू मीटर एंड पुट down as it is, right? so you will just put down the value in meters and solve the expression and you will get the value, right? So just solve. I will give, I guess this is the answer, so please match it. Okay, now the second numerical is two charges of plus minus 2 microcoulomb. That means 10 to the minus 6. फिर 10 to the minus 6 you will get 10 raised to power minus 12, right? So two charges of plus minus 0.2 microcoulomb are placed 10 raised to power minus 6 centimeter apart. So you have to find the electric field at an axial point. So yes, so here Q is given 0.2, micro is 10 to the minus 6, then again micro, so 10 to the minus 12 coulomb. Now the distance is 10 to the minus 6 centimeter. You have to use only A, so just divide this 2A, you will get 0.5 into 10 to the minus 6 centimeter. Decode into SI unit, that is meter. Just put down the value of 2,
कि ये फॉर्मूला ये शॉर्ट डाइपोल के लिए यूज करेंगे. वाई? बिकॉज यू विल सी हियर, यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.1 मीटर, बट ए नेगेटिव पार्ट्स में चला गया, दैट मीन्स बहुत ज्यादा चेंज है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा डिफरेंस है व्हेन यू कंपेयर आर एंड ए वैल्यू. सो आर इज वेरी ग्रेटर देन ए. सो व्हेन यू कंपेयर दिस वैल्यू you will get the difference. So E is 2pk divided by r cube, short dipole का फॉर्मूला होता है, राइट. सो 2 into pa की वैल्यू आप 2a into q पुट करते हैं, जस्ट पुट डाउन द वैल्यू ऑफ pa डाइपोल मोमेंट k. now r cube, k की जगह मैंने 4 pi epsilon naught, और either you will put just value of qa 9 times per 9 directly. r की आपको वैल्यू पता है, a की पता है, q की पता है, राइट. just put down the value and find down the electric field intensity. now what you have to do similar type of unsolved question. If you find any type of difficulty, please let me know. You can follow me on Instagram also. I have an official page. You can discuss the doubts there also, right? Okay, so guys, please like the video, comment and share as much as you can, and please don't forget to subscribe my channel Physics Tutorial by Jinkal Grover. And after subscribing, please hit the bell icon so that you will get the notifications for upcoming lectures, right? So thank you so much, stay safe, goodbye.